Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concept. Dear students, we are studying I/O management, and in the I/O management we have talked about principles of I/O software, I/O hardware, and then principles of I/O softwares. And now we are talking about the hardware itself, and today I will be talking about the hard disk. Rather, I will talk about the disk, and that contains a magnetic disk and the optical disk as well. So we will continue with this topic in the next lecture also, and I hope that we'll be able to complete it in the next lecture. So let us start with the disk. As I said, disk is a magnetic disk, or it could be an optical disk. Magnetic disk, also known as hard disk, that is very common terminology used. So we used to apply the file system, or we used to save our files or our data onto the disk, and we find it very convenient and very efficient if we save and create our file onto the hard disk. The hard disk is a magnetic disk, or also known as the hard disk. Is a very common terminology used in computer science. The recording of the data onto the hard disk is very efficient, so it's efficient for reading as well as for writing, for both purposes. The file system that is created on the hard disk is much efficient and very versatile also, as compared to the other storage devices or secondary storage devices. We can also use the number of hard disks together, and for that purpose we introduce another terminology which is called the RAID, disk RAID, and I'll be talking about much in detail regarding the redundant array of inexpensive disk called RAID. Then the hard disk the disk rather, also known as the optical disk, and that optical disk is your CD. एक और भी चीज़ होती थी, इसको कहते हैं डिस्केट. डिस्केट वो फ्लॉपी डिस्क के ये कहते थे, वो भी अगर if we talk about in the broader term, तो floppy disk can also be considered as the disk. Then we have CD, compact disk, recordable. Then we have digital video disc also. So maybe I will be talking about CDs and DVDs in the next lecture, but today I will try my best to complete the topic regarding the magnetic disk. So just floppy disk की मैं बात कर रहा था. Let's have a very quick comparison. When we used IBM 360 machine, so we used to have a floppy disk, and it was of the order of 360 kilobytes floppy disk. Later on the this IBM personal computer, when they were introduced in early 80s, they used to have the floppy diskettes of 8-inch size, and we can compare it with the starting and the latest technology of the modern era hard disk, which is of the order of terabytes size hard disk. But we can say that a new terminology technology introduced a few years back, and the hard disk size was 18 and 20 gigabytes. Then we had 200 gigabytes, 500 gigabytes, or nowadays we have 1 terabyte hard disk. So let's have make a very quick comparison regarding the number of cylinders. So I would like to take the flat pin here. Here we can say that number of comparison, 40 cylinders versus 10,601 cylinders of the hard disk. Then the tracks per cylinder, tracks आप ये कह सकते हैं कि the rings that are created on a floppy disk, because there was just one surface and it was double-sided, so we have one track on each side, so we used to have only 2 tracks per cylinder. But nowadays we have 6-platter hard disk having 2
the cylinders per plate, so we have 12 cylinders. Sectors per track started with a very smaller number, the 9, to currently average 281. Then sector per disc has tremendously been increased from 720 to 35 millions sectors per hard disk. Then the bytes per sector, we keep it for number of reasons, we keep it almost 512. Capacity also increased of the order of 50,000 times from 360 kilobytes to 18 gigabytes. So मैंने आपको बताया कि nowadays we even from 18 gigabytes जो है इसको आप अगर 20 times multiply कर दें या rather 13 times भी multiply करें तो दो hard disk 500 GB की hard disk जो है that is available और 60 times जो है 1 terabyte है. Okay, seek time ये वो area है where we have a very little improvement. Just अगर हम देखें ना यहाँ पे 1300 times data transfer rate increase हो रहा है, capacity 50,000 time increase हुई है, लेकिन seek time मैंने आपको last lecture में भी बताया था कि seek time mechanical part है जो उस speed से नहीं increase हो रहा जिस speed से बाकी development हो रही है. So from 6 milliseconds to it's a 0.8 millisecond, so it is just of the order of 7, and the rest time you can just go through it. So it is just to give you a comparison के आपकी कितनी development हुई है in the terms of hard disk. So we say that some disks have a microcontroller which do the bad block remapping and track caching. बैड ब्लॉक जो है उसको रीमैप करना मैंने आपको बताया था, इट कैन either be undertaken by the operating system or by the controller. It's more appropriate if it is done by the controller itself. तो I'll be talking about it later on. मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे बैड ट्रैक को रीमैप करता है, और फिर also ट्रैकिंग ट्रैक कैशिंग जो है कि पूरे का पूरा ट्रैक जो है वो कंट्रोलर अपने बफर के अंदर ले जाता है, सो दैट इट कुड ऑप्टिमाइज दी स्पीड आल्सो. सम डिस्क कंट्रोलर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन वन सीक एट अ टाइम. व्हाट डज इट मीन कि एक हार्ड डिस्क के ऊपर ये अगर फर्स्ट किया रीड ऑपरेशन चल रहा है तो सेकंड हार्ड डिस्क के ऊपर यू कैन हैव दी राइट ऑपरेशन, या एक जगह पे रीड ऑपरेशन हो रहा है तो सेकंड हार्ड डिस्क पे यू आर डूइंग द सीकिंग. सीकिंग मीन्स यू आर सीकिंग अ पर्टिकुलर लोकेशन onto the hard disk. So वो multiple जो hard disk है उसको simultaneously एक controller जो है वो handle कर सकता है. It's mean that it has the multiple buffers also, so that it could separate the data read from the different devices. So have a multiple buffers available for multiple devices. Real disk geometry is different from the geometry used by the driver. Driver क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था कि driver is the piece of software that is the part of the operating system that resides over the controller. Controller को तमाम instructions driver देता है, लिहाजा जो ड्राइवर है उसको इसकी ज्योमेट्री स्लाइटली डिफरेंट आती है नजर, एब्स्ट्रैक्शन है, एंड दैट एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर. आई विल आल्सो शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि इसका क्या मतलब है. डिस्क आर डिवाइडेड इनटू जोन्स. जो इनर जो पार्ट होता है प्लेटर का अगर आप देखें तो उसके रिंग का जो सर्कमफ्रेंस है वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा उसका सर्कमफ्रेंस, और जो आउटर रिंग है आउटर रिंग का सर्कमफ्रेंस ज्यादा है. सो एक तो आइडिया ये है कि आप यूनिफॉर्म इनर रिंग्स की पैकिंग डेंसिटी बढ़ा दें और आउटर रिंग की पैकिंग डेंसिटी कम कर दें, सो दैट यू कुड हैव इक्वल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग पर यूनिट एरिया. लेकिन व्हाई नॉट इफ वी हैव द हायर surface available, higher space available, more space available, then you can record more tracks. So there could be more zones. कहते हैं कि कुछ hard disk के अंदर 12 zones भी होते हैं, but I'll show you an example where there exist 2 zones here in the next slide. Okay. अगर इस स्लाइड के अंदर आप देखें तो जो पिंक कलर का जो सर्कल है, अगर आप इसके ट्रैक्स देखें तो इट जस्ट कंटेन 16 ट्रैक्स, 0 से लेकर 16 तक 15 तक.
only you will find 16 tracks. और फिर आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं, सॉरी ट्रैक्स नहीं, ट्रैक जो ये सर्कल होता है ना, इसको ट्रैक कहते हैं. ये जो रिंग्स हैं, रिंग कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो. तो अगर हम अज्यूम करें कि ये सेंटर है, तो इस सेंटर के गिर्द जो है वो जो सर्कल है उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ट्रैक्स. और ट्रैक्स के ऊपर जो ये पाई बनी हुई है, दीज आर कॉल्ड सेक्टर्स. तो जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग में आप देखें कि 32 सेक्टर्स हैं. अगर आप इस आउटर रिंग की बात करें, यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें, ये इसमें वी कैन फाइंड आउट के इस एरिया में देयर आर 32 सेक्टर्स अवेलेबल. सॉरी, ये माउस से आपको पता है ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती. एनीहाउ, जो इनर पार्ट है, द नंबर ऑफ सेक्टर्स आर ओनली 16 और आउटर में नंबर ऑफ सेक्टर्स आर 32. और इसको मैंने आपको बताया कि ये जो आउटर सेक्टर्स एरिया है, उसमें जो नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो उसकी पैकिंग डेंसिटी और उसकी हायर सरफेस एरिया जो ज्यादा है, उसकी वजह से ट्रैक ज्यादा बना देते हैं. बट अपेरेंटली ये जो जोन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 जोन है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जोन. ये जो जोन्स हैं ये बट नजर आते हैं किसको, ये वर्चुअल है फॉर डिवाइस ड्राइवर को ये सारे के सारे यूनिफॉर्म हर ट्रैक के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जो कि आप देखें कि यहाँ पर आपको 25 सेक्टर्स जो हैं पर ट्रैक जो है वो आप देख सकते हैं. सो दैट इज द अगेन सम एब्स्ट्रैक्शन के हार्ड डिस्क की जो प्लेटर है वो एक जैसा नजर आता है इनर पार्ट से लेकर आउटर पार्ट तक. ओके, सो बट ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी कौन हैंडल करता है, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर की, डिस्क कंट्रोलर की. तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो इनर में ज्यादा ट्रैक के ऊपर सेक्टर्स हैं और आउटर में कम है, इनर ट्रैक में कम सेक्टर्स हैं और आउटर ट्रैक्स के अंदर ज्यादा सेक्टर है, इस वाली कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोलर खुद हैंडल करता है और वो उससे शेयर नहीं करता, और ड्राइवर के लिए कन्वीनियंट होता है उसको यूनिफॉर्म कंसिडर करना. Next is redundant array of inexpensive disk, RAID. Initially it was called redundant array of inexpensive disk, लेकिन later on it is called redundant array of independent disk. Okay, so parallel I/O to improve performance and reliability versus single large expensive disk. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बड़ी डिस्क है, अब वो सिर्फ उसको मैच करने के लिए वो उसको इनएक्सपेंसिव कहा तो इसको एक्सपेंसिव कह दिया. So one large disk versus set of disks, एक से ज्यादा डिस्क जो है which looked as if a single disk to the operating system, एंड यूजर को वो एक ही डिस्क नजर आती है. तो उसका एडवांटेज क्या है कि 2 बातें हमने कही कि उससे इंप्रूव होती है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी. इसकी बात हम थोड़ी देर में फर्दर विल टॉक अबाउट इट. सो RAID is a bunch of disk which appears like a single disk to the operating system and hence to the end user. इसी तरह SCSI disk है. SCSI कंट्रोलर के हैंडल अप टू 7 डिस्क पर कंट्रोलर. किसी जगह पे आपको 8 भी आएगा नजर के अप टू 8 डिस्क पर कंट्रोलर हैंडल कर सकता है, लेकिन बेसिकली इट्स 7 डिस्क, क्योंकि उसका जो कंट्रोलर है वो 3 बिट से आइडेंटिफाई करता है और 111 इज 7. सो समटाइम यू फाइंड के उसके साथ आपकी ऑप्टिकल डिस्क और 7 हार्ड डिस्क जो है कॉम्बिनेशन है, बट this is basically given in different books. Some books says 7, some says 8. So SCSI is a set of standard to connect the CPU to peripheral. और ये peripheral के साथ connect करती है कौन कौन सी, मैंने आपको बताया CD drive as well as the hard disk which can be connected with the help of broadband port which is called a SCSI port. Different architecture from level 0 through level 6. तो यहाँ पर भी 7 level का architect है जो कि आपको RAID जो है वो provide करता है. I'll be also explaining to that. So basically when we talk about the RAID, so इसका डिजाइन आर्किटेक्ट जो है it gives you 3 good performances. Number 1, integrated, that the RAID is a set of physically different drives but look like as a single drive. तो एक बड़े large size की आपको डिस्क नजर आती है जिसको कि हम RAID कहते हैं, RAID.
Next is کہ اس کی جو performance ہے, since instead of reading the data from the single disk, instead of that you are reading the data from the multiple disks. تو ایک ڈسک سے ریڈ کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں سیٹ آف ڈسک کے اوپر تو جو ریڈ رائٹ ٹائم ہے وہ obviously اتنے ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. نیکسٹ از redundancy. With this redundancy you can recover the data. I'll talk about it later on جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا کو کیسے ڈفرینٹ بٹس کو اسکیٹرڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ہارڈ ڈسک کے اوپر, اور once we scatter that then we can recover the data with the help of different techniques, which is one is called cyclic redundancy check and second one is ECC, اور یہ بھی ہے ایک طرح کا چیک ہے اور جس کی مدد سے ہم ڈیٹا کی جو کوئی بٹ ڈراپ آؤٹ ہوتی ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. سو دا ریڈنڈنٹ ارے آف انڈیپینڈنٹ ڈسک, اب ان ایکسپینسو کی بجائے ناؤ ڈیز اٹ از کالڈ ریڈنڈنٹ ارے آف انڈیپینڈنٹ ڈسکس. اٹ کنسسٹ آف 7 levels 0 through 6. Level 0, it's not called not a true RAID because it does not include redundancy. اس میں جو ہے نا redundancy نہیں آتی بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈیٹا کو پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو بریک کرتے ہیں in the form of stripes. اگر آپ دیکھیں اسٹرائپ نمبر 0 1 2 3 4 5 6 7 یہ جو آپ کو اسٹرائپس نظر آ رہی ہیں تو the data is broken up into strips اور each strip is recorded on independent disk unit which is not independent if they are part of the RAID. So user and the system data are distributed across all the disk in an array. Array کون سا؟ Redundant array of independent disk. So logical disk is divided into the form of strips. اب جب آپ نے ڈیٹا کی ریڈ اور رائٹ کرنا ہے تو you will break the data into form of strips. Those strips will be written parallel in different, اس example میں 4 hard disk پہ the data will be recorded and then you can read back the data out of these 4 disks and in that way you can improve the performance. لیکن redundancy نہیں آئی. redundancy کیسے آتی ہے؟ جب ہم duplication کرتے ہیں, جب ہم ریکوری کے لیے ڈیٹا کو ملٹیپل ڈسک کے اوپر یا تو ڈپلیکیٹ رائٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا میکینزم استعمال کرتے ہیں through which کہ the lost data could be recovered very quickly. اور یہ کام ہم کرتے ہیں RAID نمبر 2, RAID 2 which is ہم نے 0 سے سٹارٹ کیا تو RAID level 1. 2 means second. So the redundancy is achieved by the simple expanding it to a duplicate set. تو instead of having one set یہاں پر اب یہ strips ہے ہمارے پاس, where is my یہ رہا, یہ ہم نے یہاں پر ڈپلیکیٹ کر دیا اور وی آر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ڈیٹا ان ڈپلیکیٹ. سو دیر از نو رائٹ پینلٹی بیکاز یو کین جسٹ سینڈ اٹ ٹو دی کنٹرولر اینڈ کنٹرولر کین اسٹارٹیڈ رائٹنگ اٹ. سو کیونکہ پیرول میں ہے, جتنی دیر میں ڈیٹا یہاں پہ رائٹ ہوگا اتنی دیر میں ڈیٹا جو ہے وہ سیکنڈ سیٹ میں رائٹ ہو جائے گا. وین اے ڈرائیو فیل دا ڈیٹا میں اسٹل بی ایکسیس فرام دی سیکنڈ ڈرائیو, کیونکہ یہ ایک ہاٹ پلگ بیک اپ ہے جس کو کہ اور بھی ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس میں کہ آپ شیڈوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور مررنگ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں ہم جا رہے یہاں پر, بٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ میں ڈیٹا اویلیبل ہے. سو ایٹ دا ٹائم یو آر جسٹ گوئنگ ٹو read the data then آپ دونوں میں سے کسی ایک سے ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرویں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں سے ڈیٹا ریڈ آؤٹ کرے, اس کے بعد آپ اس کا چیک سم دیکھیں. اگر اس کا چیک سم جو ہے یا اس کے جو ڈیٹا کی ویلیڈیٹی اگر دونوں کی آتی ہے تو کوئی سا ایک سیٹ یوز کرویں, اور اگر کسی ایک میں ڈیٹا کی ایرر ہو تو جو صحیح والا ڈیٹا ہے اس کو آپ دوسرے سیٹ پہ کاپی کر سکتے ہیں. اور پرنسپل ڈس ایڈوانٹیج اس کی کیا ہے؟ کاسٹ. کاسٹ کیوں؟ کیونکہ آپ کو 4 کی جگہ پر 8 ڈسک یوز کرنی پڑ رہی ہیں.
Then RAID level 2, a certain improvement which makes use of a parallel access technique, or data stripping is once again used, and the technique is called the Hamming code is used. अब Hamming code आपने यकीनन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो क्या टेक्निक है जिससे आपको डेटा को ब्रेकअप करते हैं मल्टीपल चंक्स के अंदर और फिर उसको रीड बैक करते हैं तो उसको दोबारा कंबाइन करते हैं. इट्स एन इफेक्टिव चॉइस इन एन एनवायरनमेंट in which many disk errors occur. तो इसकी मदद से क्या होता है कि आपका जो डेटा जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है. One very important point that I would like to explain it here is that कि ये जो levels हैं ये कोई hierarchy नहीं है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं और इनको बस डिफरेंट नाम 0, 1, 2, 3. आप ये नहीं कह सकते कि लेवल 2 जो है वो लेवल 1 से बेहतर है या लेवल 1 जो है लेवल 0 से बेहतर है. ऑल्दो वी हैव अ डिफरेंट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरी लेवल, लेकिन ये कोई हिरारिकल ऑर्डर नहीं है एवोल्यूशनरी जो एक से बढ़कर एक इंप्रूव करके आप लेकर आते हैं, बल्कि दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स इन विच हैव बीन गिवन अ न्यूमेरिक नंबर. Next is RAID level 3. What we do, आप अगर इसमें से देखें तो आपकी जो एक निबल है, निबल किसे कहते हैं? 4 बिट्स को. एक बाइट में कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स. तो एक बाइट के अंदर 2 निबल्स होती हैं. तो विद ईच निबल here 1, 2, 3, 4 bits, that is each nibble, you have got 1 parity bit there. So it requires only a single redundant disk, no matter how large the disk array is. आपने सिर्फ एक डिस्क रखी हुई है where you are saving the parity bit, और उसकी मदद से हम अगर कोई बिट यहाँ पर लूज हो जाती है तो we can always use the parity bit to recover that particular bit if we lose. और अगर simultaneously 2 बिट्स हो जाएं तो फिर ये पैरिटी बिट से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए फिर आपको कुछ और टेक्निक यूज करनी होती है. सो यू एम्प्लॉय पैरेलल एक्सेस विद डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन स्मॉल स्ट्रिप्स एंड कैन अचीव अ वेरी हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स, क्योंकि अब आप जो है डेटा को बिट्स की फॉर्म के अंदर आप उसको रीड आउट कर रहे हैं और 4 बिट्स जो है साइमल्टेनियसली 4 डिफरेंट डिस्क से. तो बिट स्ट्रीम्स के लिए आपके हेड को सिंक्रोनाइज होना है सिलेंडर के साथ, उस ट्रैक के साथ, और फिर वहां से आप डेटा रीड करना शुरू करें. तो आप ये देखें कि जो परफॉर्मेंस है दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड मल्टीप्लाई बाय 4. आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने 4 डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डेटा को. नेक्स्ट इज RAID level 4. In this RAID level we make use of an independent access technique. A bit by bit parity strip is calculated across the corresponding strips. In strips में वहां तो हमने निबल्स कर रहे थे, अब ये corresponding strips की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि we strips on each disk and the parity bits are stored in a corresponding strip on the parity disk. अब यहाँ पर हमने बजाय उसको निबल्स की बजाय हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स रख रहे हैं और हर स्ट्रिप की हम पैरिटी बिट कंप्यूट करते हैं और उसको स्ट्रिप की फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं. देखिए स्लाइटली डिफरेंट है विद द प्रीवियस वन जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया. सो इट इन्वॉल्व्स अ राइट पेनल्टी व्हेन एन IO राइट रिक्वेस्ट ऑफ स्मॉल साइज इज परफॉर्म. जब आप स्मॉल साइज के लिए अगर आप एक छोटी सी स्ट्रिप परफॉर्म करेंगे, रीड या राइट आप कैरी आउट करेंगे, तो आपको ये सारा ऑपरेशन जो है वो सारे उसके ऊपर करना पड़ेगा, पूरे अरे के ऊपर करना पड़ेगा. The question is why? The answer is very simple, because you have to calculate the parity bit also. read और write time के ऊपर आप खास तौर पे जब आप write down कर रहे हैं तो फिर आप उसको read after write करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपकी यहाँ की parity bits जो हैं that you update it according to that particular combinations of the strips. अब ये बिट्स की फॉर्म में नहीं है, बिट्स में इट्स बिट फास्टर और वो उनके साथ आप रियल टाइम हार्डवेयर के थ्रू पैरिटी बिट कंप्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में है, लिहाजा स्ट्रिप की फॉर्म के अंदर डेटा को कंबाइन करना, फिर उसकी पैरिटी कैलकुलेट करना, फिर वो डिस्क के ऊपर राइट करना सेपरेट डिस्क पे, अगेन नॉट इन द फॉर्म ऑफ सीरियल बिट्स, अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप. तो उसको स्ट्रिप बनाकर फिर उसको राइट डाउन करना, इट इज बिट टाइम कंज्यूमिंग.
Next, another improvement similar to the RAID 4 but distributed the parity bit across all disks. बजाय इसके कि एक डिस्क के ऊपर आप parity bits रखें, आप क्या करते हैं कि parity bit को distribute कर देते हैं और इसकी distribution जो है round robin है. आप देखें कि यहाँ पर parity bit जो है वो first one strip use हो रही है, यहाँ पर second, then third, then fourth and then fifth, इस तरीके से. और आप parity bits के अंदर भी चार बिट्स को आपने सेट बनाने के बाद 4 8s यहाँ से 4 8 12 और 16 और 20 डिपेंडिंग कि आप अपनी कितनी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं और आपका डेटा साइज क्या है और आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो उस हिसाब से there is an improvement in the RAID 4 that has been provided in the RAID 5. So typical allocation is वो मैंने अभी आपको explain किया round robin, and it has the characteristics that the loss of any one disk does not result in the loss of data. That data can easily be reconstituted and recomputed with the help of the very strong parity bit algorithm that you employ in order to record the data onto this. Or finally, just like previous one hai, but the difference is that two different parity calculations are carried out. दो डिफरेंट पैरिटी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है. पैरिटी हो सकती है, इवन पैरिटी हो सकती है, ऑड पैरिटी हो सकती है. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट एल्गोरिदम की मदद से two different parity calculations employ कर सकते हैं, and then you can just distribute these parity strips into different disks in different combinations. So it provides extremely high data availability so that whenever you find कि अगर आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम है, you can always recover from that particular problem. It incurs a substantial write penalty because each write affects two parity blocks. ठीक, obvious है. जब आप या तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और या आप रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू. अगर आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो आप RAID 0 यूज़ करें, जिसमें कि कोई रिलायबिलिटी को आपने इतना कंसिडर ही नहीं किया. और अगर दरमियान का कोई यूज़ करेंगे तो देन यू विल हैव दी some improvement in the performance and some improvement in the reliability. And then if you focused more on reliability, then you have to sacrifice a little bit performance. So अगर हम quickly देखें, RAID 0 uses a strips of k sectors per strip. K अगर 4 है तो 0 1 2 3 और means number of strips are according to k sectors. So consecutive strips are on different disks. Read write consecutive strips in parallel or good for big enough request, क्योंकि simultaneously आप number of different disk के ऊपर अपनी request को distribute कर सकते हैं. RAID level 1 basically duplicate the disk और writes are done twice. So basically आप क्या कर रहे हैं कि data की reliability को improve कर रहे हैं. अगर एक set disk का खराब हो जाए तो दूसरे disk के ऊपर आपके पास 100% hot फॉर्म के अंदर, हॉट प्लग इन फॉर्म के अंदर, हॉट बैकअप फॉर्म के अंदर वो अवेलेबल है. हॉट मीन्स कि आपको प्लग इन नहीं करना पड़ता जाके, बल्कि आप सिंपली रियल टाइम के अंदर, इफ द डेटा यू कैन नॉट रीड फ्रॉम द वन RAID, then you can just simply read it out from the other RAID. Dear students, since these are very, very simple concepts, straightforward concepts, so you might find me explaining the things very quickly and very fast. और जिस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज़ी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शॉर्टकट क्या है कि थोड़ी सी स्पीड अपने प्लेयर की कम करवें, 10%, 20%, 25%. Okay? So, but since I have to cover up, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशंस हैं, सो आई नीड टू कवर अप, बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि यू जस्ट रीड इट आउट बाय योरसेल्फ. ओके. लेवल 2 वर्क्स विद इंडिविजुअल वर्ड्स, स्प्रेड वर्ड प्लस ECC और ओवर द डिफरेंट डिस्क, और ये चेकसम है जिसकी मदद से आप डेटा को रिकवर करते हैं. Need to synchronize arms to get parallelism.
लॉजिकल बात है कि जब आपने उसको उसी सीक्वेंस में मिररिंग आप के लिए, मतलब आप डेटा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट उसके साथ, और उन सारों को उठाकर आपने कंबाइन करना है इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द डेटा जो कि आपने प्रेजेंट करना है, तो फिर आपको उसके तमाम आर्म्स जो हैं उसको सिंक्रोनाइज करना होगा. मैं इसके ऊपर भी आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 स्लाइड्स के बाद. ये वो एग्जाम्पल्स है और ये आपकी बुक से पिक की हुई है, तो आई जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल आई पिक्ड अप फ्रॉम अनदर बुक बट दिस वन इज फ्रॉम योर ओन बुक. Then RED level 3, 4 and 5. RED level 3 works like level 2 except all parity bits go on a single drive. ठीक है. RED level 4 and 5 work with strips. Parity bits for strips go on to a separate drive for level 4 और several drive for level 5. वो जो मैंने बताया था ना कि वो एक थी और फिर बाद में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था दो के सेट डिफरेंट ड्राइव्स के ऊपर, और लेवल 6 में हमने वो कॉम्बिनेशंस बना दिया था. लेवल 6 में हम दो तरह कंप्यूट करते हैं पैरिटी को. लेवल 6 हाई डेटा अवेलेबिलिटी, 2 डिफरेंट पैरिटी कंप्यूटेड ऑन डिफरेंट डेज एंड ऑब्वियसली यू हैव टू पे द राइट प्राइस फॉर दैट. यानी कि राइटिंग डेटा राइट के टाइम पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर टाइम. 3, 4, 5, 6 और 7. ओके, क्विकली वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, लेवल 0 है और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है नॉन रिडंडेंट है. लेवल 1 जो है वो मिरर्ड है और लेवल 2 जो है रिडंडेंट वाया हेमिंग कोड. इसमें क्या करते हैं, बिट इंटरलीविंग करते हैं लेवल 3 में, और ब्लॉक इंटरलीविंग कर रहे हैं हम पैरिटी फॉर द पैरिटी, और ये भी उसी हिसाब से पैरिटी के हिसाब से. और ये जस्ट आप काइंडली रीड इट आउट, ये मैंने एक और बुक से आपके लिए कॉपी की है सो डैट कि आप एक जगह पर इसका कंपैरिजन करें. और ये वही तमाम चीज़ें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन की हैं. ये आपको बताता है कि आपको डिस्क कितनी चाहिए. लेवल 0 में जितना आप रखना चाहें सेट बनाकर, एन डिस्क हैं तो एन चाहिए. मिररिंग के लिए आपको जितने आपने सेट बनाया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें क्योंकि आपने 100% मिरर करना है. यहाँ पर n प्लस m है जो कि m जो है प्रोपोर्शनल टू log n, ये आप डिपेंड करता है कि आपकी पैरिटी के लिए आप किस तरह इसको यूज करना चाह रहे हैं. और ये हेमिंग कोड के अंदर आपको कंप्यूट करना होगा कि आपको m की वैल्यू क्या है. यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा डिस्क यूज कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 एक्स्ट्रा डिस्क यूज कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's talk about the hard disk formatting. Low level format software or high level formatting. जब आप हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, when you get the hard disk, it is required to be formatted twice. वंस, एक तो जब आप ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसको फॉर्मेट करना होता है जो कि लो लेवल फॉर्मेटिंग कहलाती है. उसके बाद आप उसके ऊपर पार्टीशंस बनाते हैं. जब आप पार्टीशन बनाते हैं तो एक दफा फिर उसको आपको फॉर्मेट करना पड़ता है. तो बेसिकली आपको पहले लो लेवल फॉर्मेटिंग करनी होती है, फिर आपको हाई लेवल फॉर्मेटिंग करनी होती है आफ्टर क्रिएटिंग द पार्टीशन. इन दोनों में हम क्या क्या काम करते हैं, लेट्स क्विकली सी दैट. When we carry out the low level formatting, तो हमने वो ब्लैक डिस्क के ऊपर हमने वो ट्रैक्स क्रिएट करने हैं, ट्रैक्स के ऊपर सेक्टर बनाने हैं, हर सेक्टर के ऊपर उसका सेक्टर नंबर लिखना है. आल्सो वी नीड टू राइट डाउन अ बिट सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स दैट टेल्स द हेड या पीछे जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोलर है, जो उसको रीड करके उसको पता चलता है कि ये स्टार्ट ऑफ ट्रैक आ गया है यहाँ पर, ताकि इसके आगे आप डेटा रीड करना शुरू कर दें. तो स्टार्ट ऑफ ट्रैक जो है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रीएम्बल, प्लस इट आल्सो कंटेन्स द सेक्टर नंबर ऑल्सो. आपने उसको सेक्टर को एक नंबर भी असाइन करना है सो डैट यू कैन डिस्टिंग्विश कि आप इस वक्त कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर को रीड आउट कर रहे हैं. ठीक. और उसके बाद जनाब आप ये यूज करेंगे, क्या बोला, डेटा आप उसके ऊपर जगह छोड़ेंगे और फिर जब आप वंस यू लेटर ऑन राइट डाउन आप ECC, और ये आपको मैंने बताया था कि ये आपका चेकसम के लिए इसको यूज करते हैं. देन वंस यू क्रिएट दीज
सेक्टर्स ऑन टू डिफरेंट ट्रैक्स। अगर आप ये देखें, हमने यहां से स्टार्ट किया ये सेक्टर बनाने, ठीक, ये देखें 0 से स्टार्ट किया और ये सारे सेक्टर बनाते चले गए, ठीक है भाई। व्हाट हैपन्स, यहां से 0 होना चाहिए था ना, यहां नहीं है 0, अगला 0 जो है ये यहां पर है और ये डिस्क इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक। और नेक्स्ट टाइम 0 जो है फिर उतना ही आगे चला गया, इससे अगले ट्रैक में गए तो 0 उतना आगे चला गया, इससे अगले ट्रैक में 0 उतना आगे चला गया और इससे अगले ट्रैक में 0 उतना आगे चला गया। इस चीज को हम कहते हैं लो लेवल फॉर्मेट सिलेंडर स्क्यू, cylinder skew. In order to position sector 0 offset from one track to next track, one in order to get consecutive sector. यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि ट्रैक जो है ना वो समझे कि चूड़ियां हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और वो सारी को देखें तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। अब दूसरी उससे छोटे साइज की है, उससे छोटे साइज, उससे छोटे साइज, ठीक है ना। ये देखें, यहां से आप मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब आप जितनी देर में यहां से लेकर यहां तक मूव करेंगे, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जाएंगे, ठीक है। अब सिलेंडर वाइज मूव कर रहे होते हैं और एक सिलेंडर के ऊपर जो रिंग्स होते हैं ना वो आपके ट्रैक्स होते हैं और तमाम ट्रैक्स जो हैं वो एक वक्त के जो सारे ट्रैक्स हैं वो मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं। तो आप ट्रैक बाय ट्रैक आप आगे मूव कर रहे होते हैं हेड को, ओके, समझ में आई बात। सो बाय द टाइम यू मूव फ्रॉम द आउटर ट्रैक टू द इनर ट्रैक, साइमल्टेनियसली हार्ड डिस्क भी रोटेट कर रही है। तो यहां पर से नेक्स्ट 0 इसको यहां पे नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट 0 जो है सपोज 0 आप यहां पर बना दें, बाय द टाइम यू विल रीच देयर यू आर समवेयर हियर, या यहां पर है। अब क्या है, थोड़ा सा आपने इंतजार किया तो 0 आ गया, लेकिन अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 0 क्रॉस हो चुका होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको पूरा एक रेवोल्यूशन इंतजार करना पड़ेगा हार्ड डिस्क का, इसका प्लेटर का, कि वो जो आपका ट्रैक है पूरे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे फिर 0 पे पहुंचे, फिर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे फिर अगले के ऊपर पहुंचे। तो इस चीज को कवर करने के लिए हम इसको कहते हैं स्क्यूड फॉर्मेट सिलेंडर स्क्यू, ओके। अब इसको फर्दर हम इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरवीविंग सेक्टर। जब हम सेक्टर क्रिएट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क, सो व्हाट वी कैन डू इज कि आप यहां पर देखें, एक तरीका तो यह है कि कंसेक्टिव सेक्टर बनाते चले जाएं, जैसे कि वो आउटर के ऊपर आपने 0 1 2 3 4 करके बनाया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय द टाइम यू विल रीड दिस और ये डेटा रीड होने के बाद आप भेजते हैं तो ये क्या आपका नेक्स्ट यहां तक पहुंच चुका होता है, ठीक। लेकिन अगर इस चीज को हम कवर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऑल्टरनेट दे दें, 0 1 2 3 और फिर 4 5 6 एंड 7, ओके। ये थोड़ा ड्राइंग अच्छी हो गई जरा। सो कॉपिंग टू अ बफर टेक्स टाइम, जितनी देर में डेटा बफर के अंदर कॉपी होता है तो कुड वेट अ डिस्क रोटेशन बिफोर हेड्स नेक्स्ट कम्स अंडर दी हेड। वो जो रोटेशन जो है उसके लिए जितनी देर में आपने पहला सेक्टर रीड किया ना, अब ये सेक्टर कहां पे जा रहा है, ये जनाब ट्रेवल कर रहा है बस के ऊपर और ये आपके बफर में, बफर कहां पे है, कंट्रोलर के अंदर वो बफर है। जितनी देर में वो सेव करेगा इतनी देर में वो रोटेट हो जाएगा। अब इस चीज को कवर करने के लिए ताकि वो नेक्स्ट कंसेक्टिव सेक्टर रीड कर सके, ये इसको कहते हैं सिंगल इंटरवीविंग, ठीक है। जो बी है, बी इज कॉल्ड बेसिकली सिंगल इंटरवीविंग, ये, और दिस इज कॉल्ड डबल इंटरवीविंग। अब डबल क्या है, 0, ये कहां गया भाई, ये तो कुछ यहां, सॉरी ये इस तरह घूम रहा है, आई एम सॉरी, ये इस तरह घूम रहा है भाई। 0 2 छोड़ के 1, 2 छोड़ के 2, 2 छोड़ के 3, देन 2 छोड़ के 4, 2 छोड़ के नहीं मिला तो फिर 3 छोड़ने पड़ेंगे, 4, फिर जनाब 2 छोड़ के 5, फिर 2 छोड़ के 6 और फिर 2 छोड़ के 7। इसको हम कहते हैं डबल इंटरवीविंग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये तो है हमारा व्हेन वी आर डूइंग दी लो लेवल फॉर्मेटिंग।
what we do in the high level formatting. High level formatting में मैंने आपको बताया था we create partitions. So in order to install the operating system onto the disk, you just create a partition. आपको याद होगा फिर एक partition को आपको एक्टिव करना है, उसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड रखना है, फिर आपने फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, फिर आपने उसको हर पार्टीशन को एक नाम भी असाइन करना है, फिर हर पार्टीशन का स्टार्ट और एंड भी रखना है. तो ये सारा काम जो है जो हम करते हैं हाई लेवल में फॉर्मेटिंग के अंदर, और इसको हम कहते हैं क्रिएट दी पार्टीशन. Then Pentium के केस में सेक्टर 0 has a master boot record with partition table. आपको याद है मैंने ये 2 दफा आपको पढ़ा चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन के अंदर और एक शायद प्रोसेस मैनेजमेंट में या किसी और लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको Pentium boot sequence बताया था. So Pentium can have multiple partition. You can have 1, 2, 3 or 4 partitions. और de facto जो नाम है, first partition is called C:, second is called D and third is called E. M पता नहीं है कहाँ से आ गया, इसको काट दीजिए. And next is called F:. और अगर इसमें से जनाब 3 पार्टीशन है तो F जो होगी वो आपकी CD ड्राइव की पार्टीशन हो जाएगी. अगर 4 है तो फिर G आपकी CD ड्राइव की पार्टीशन हो जाएगी. अब देयर इज अ क्विज कि A और B कहाँ गए. वो जो पुराने हमारे IBM के सिस्टम हुआ करते थे ना, उसमें फ्लॉपी ड्राइव को A कहते थे, तो फिर B, उसमें 2 फ्लॉपी ड्राइव्स हुआ करती थी. एक फ्लॉपी ड्राइव को A कहते थे और दूसरी फ्लॉपी ड्राइव को B कहते थे, और हार्ड डिस्क स्टार्ट होती थी C से. तो यूनिक्स में कैसे होता है, यूनिक्स में यू नो डैट कि आपको माउंट करनी पड़ती है डिवाइस जो है फाइल सिस्टम के अंदर. वंस यू माउंट द डिवाइस इनटू द फाइल सिस्टम, सो उसके बाद फिर आपको वो रूट के ऊपर रूट या /device/disk0 और फिर आगे आप इसका जो भी नाम देना चाहें वो फाइल सिस्टम में जिस डिवाइस को भी आप माउंट करते हैं वो आपके फाइल सिस्टम के पाथ का पार्ट बन जाती है. तो जो जो आपने नाम उसके पाथ में यूज किए वो उसका आपकी डिवाइस का नाम हो जाता है. आपको कैटेगोरिकली कोई नाम जो है आप अपनी चॉइस से उसको रख सकते हैं. ABCD नहीं होता है जैसा कि आपकी विंडोज एनवायरनमेंट में होता है. सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू बूट वन पार्टीशन हैज टू बी मार्क्ड एज एक्टिव. ये मैं आपको बता चुका हूं 2-3 दफा. उसके बाद क्या होगा कि एक्टिव पार्टीशन से आपको मास्टर बूट रिकॉर्ड उसका सेक्टर 0 पर है, इसको रीड करेंगे. बूट रिकॉर्ड जो होगा वो बूट प्रोग्राम को लोड करेगा, और जनाब आपका जो पार्टीशन है उसके ऊपर फिर हम जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट जो है उसको हमने कैसे पढ़ा था, 2 मेथड्स पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था बिट मैप मेथड, जिसमें हम 0 और 1 के लिए 0 यूज करते हैं अगर हमारे पास ब्लॉक अवेलेबल है, 1 यूज करते हैं द ब्लॉक इज ऑक्युपाइड. और दूसरा हमने मेथड पढ़ा था जिसको हमने कहा था फ्री लिस्ट. तो दोनों में से जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं पार्टीशन टाइम पे अगर उसको पता है कौन सा मेथड है तो वो उसके हिसाब से आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी क्रिएटेड. रूट डायरेक्टरी विल बी मार्क्ड और एम्प्टी फाइल सिस्टम विल बी क्रिएटेड. एम्प्टी फाइल सिस्टम यूनिक्स में ET2 और ET3 है आपके फाइल सिस्टम. ET है शायद, मे बी ओके, मैं इंशाल्लाह आपको नए उसमें बताऊंगा. इस वक्त आई डोंट रिमेम्बर कि पता नहीं ET है कि EXT2 और EXT3. यस. और विंडोज में आपको मैंने बताया था कि FAT16 और FAT32 और NTFS फाइल सिस्टम है और जो कि विंडोज में यूज होता है, और एक वर्चुअल फाइल सिस्टम भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं. ओके. व्हेन दी पावर इज स्विच्ड ऑन, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऐसी सूरत में आपका जो बायोस है उससे आपको पता चलता है कि जो बताता है कि एक्टिव पार्टीशन कौन सी है. वहां से एक्टिव पार्टीशन से आप बूट ब्लॉक को रीड करते हैं और चेक दी पार्टीशन विच पार्टीशन इज एक्टिव, देन रीड दी बूट सेक्टर that contains a program that loads the operating system, and once the operating system is loaded, operating system kernel is loaded is in the memory, तो फिर आपका जो environment जो है वो ready होती है for using. ओके. सो ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने रिड्यूस करके बताए हैं. मैंने आपको 8-10 स्टेप जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में बताए थे. इनफैक्ट वो डिटेल्ड हैं. यहाँ मैंने पार्टीशन के हवाले से बताया क्योंकि आप जस्ट क्विकली गॉन थ्रू कि हमने पार्टीशन क्रिएट क्यों की थी और उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं.
Next is the disk performance parameters. What are the disk performance parameter? اور ڈسک پرفارمنس پیرامیٹرز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ویٹ فار دا ڈیوائس. اگر ایک یوزر نے ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا جو ہے ریڈ یا رائٹ کرنا ہے, دین دا یوزر از ریکوائرڈ ٹو ویٹ فار سم ٹائم. And then once the device is allocated to that particular user, means اس user کے process کو data allocate ہوتا ہے. اس لیے اس کا ہم نے یہاں پر کوئی ٹائم نہیں مینشن کیا کہ ڈپینڈنگ اپون کہ کیا سچویشن ہے, وہ کتنی دیر کے بعد process کو ڈسک allot ہوگی. اس کے بعد wait for the channel, آپ کا جو availability ہے اس کی ہارڈ ڈسک کی. ونس دیٹ ہارڈ ڈسک, اور اس چینل کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو کنٹرولر ہے, ٹھیک ہے نا, کنٹرولر کے پاس کتنی دیر میں کنٹرولر آپ کی اسائنمنٹ کو پک کرتا ہے. سپوز دیر آر لاٹ آف یوزرز which have submitted their request to the hard disk to read or write the data. All these requests are arranged in the form of a queue, اور یا کسی الگوریدم کے تحت it is the service has been provided to the user. So وہ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے لیے آپ کو جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے لیے آپ کو بس بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک, جس کے لیے آپ کی ریکویسٹ جو ہے نا وہ اس کے پرٹیکولر کنٹرولر تک جاتی ہے. ونس دی کنٹرولر اسٹارٹ پرووائڈنگ یو دا سروس, آپ کے جاب کو ایگزیکیوٹ کرنے لگتا ہے, تو سب سے پہلے اسے سیک کرنا ہوتا ہے. سیک کرنے کا مطلب یہ ہے, ابھی ہم اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سیک کرنے کا مطلب کہ پریسائز لوکیشن کے اوپر پہنچ جائیں جہاں پہ آپ نے ڈسک کے اوپر ڈیٹا رکھا ہوا ہے. روٹیشنل ڈیلے کی بھی بات کریں گے کہ وہ سیکٹر جو ہے وہ روٹیٹ کر کے ہیڈ کے نیچے آ جائے, اور اس کے بعد پھر ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم جو ہے وہ کتنا چاہیے. یہ تو کچھ جو ڈیٹا ہے دیٹ از ریکارڈڈ اور جو آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے یہ ان دی فارم آف ملی سیکنڈس کے اندر یہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, یا مائکرو سیکنڈس کے اندر آپ کا سیک ہو جاتا ہے. اور پھر مائکرو سیکنڈس کے اندر ہی 10 مائکرو سیکنڈس رفلی چاہیے ہوتے ہیں ٹو فار دا سیکنگ, اور 6 مائکرو سیکنڈ فار دی روٹیشنل ڈیلے, اور ڈیٹا جو ہے وہ فیو میگا بٹس پر ملی سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. سو دا ایکچوئل ڈیٹیل آف دا ڈسک آپریشن ڈیپینڈس آن دی computer system, operating system, and nature of IO channel and disk controller hardware. ٹھیک ہے, اور پھر وہ بھی آپ آپریٹنگ سسٹم میں پڑھ چکے ہیں. پروگرامڈ آئیو ہو رہا ہے کہ انٹرپٹ ڈریون آئیو ہو رہا ہے کہ ڈی ایم اے ہو رہا ہے. سو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں which are involved. Okay, so there are few more topics related to the disk. I would like to go through it a bit quickly so that کہ ہم اس ٹاپک کو آج ختم کر سکیں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں کوئکلی اس کو گو تھرو کر دوں. پوزیشننگ دی ہیڈ, ریڈ رائٹ ہیڈس, ریڈ رائٹ ہیڈ کو پوزیشن کرنے میں کیا کیا اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. when the disk drive is operated, the disk is rotating at a کانسٹنٹ سپیڈ کے اوپر ڈسک روٹیٹ کر رہی ہے. کیا مطلب اس کے پلیٹرز جو ہیں وہ تیزی سے گھوم رہے ہیں. اور دیر از اے کوئز, آپ بتائیے کہ آر پی ایم جو ہے کتنے آر پی ایم ہے جو آج کل لیٹسٹ ڈسک ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں, اس کے نمبر آف ریولیوشن پر منٹ کتنے ہیں. اس کا جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا. ٹو ریڈ اور رائٹ دا ہیڈ مسٹ بی پوزیشن ٹو دا ڈیزائرڈ ٹریک. پہلے تو آپ نے اس کو ٹریک کے اوپر پہنچانا ہے, پھر ٹریک کے پاس ٹو دا بگننگ آف دا سیکٹر. ایک ٹریک کے اوپر آپ نے دیکھا ملٹیپل سیکٹرز ہوتے ہیں, وہ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر روٹیٹ ہو کر آ جائے گا. پھر ٹریک سلیکشن انوالوز دا موونگ دی ہیڈ, ہیڈ کو موو کرنا. اب دیر آر 2 types آف ہیڈز اویلیبل. ایک وہ جو موونگ ہیڈ ہے جو کہ سلنڈر کے اندر جو پلیٹس ہوتی ہیں, اگر اس طرح کی یہ پلیٹس ہیں تو پلیٹ کے اندر یہ پلیٹس آپ اسیوم کریں یہ پلیٹس ہیں, تو ہیڈ جو ہے نا یہ اس طرح اس کے اندر موو کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس پلاٹر کو اگر ہم نے ریڈ کرنا نا تو ایک ہیڈ آرم ہے, یہ آرم ہے یہ, ٹھیک ہے, اور اس آرم کے اوپر ایک ہیڈ اوپر ہے اور ایک ہیڈ نیچے ہے, تو یہ اس طریقے سے یہ آگے موو کر رہا ہے. اور سائملٹینیس یہ جو اندر والی پلیٹ ہے جو میری یہ فنگر ہے یہ روٹیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو آرم ہے یہ اس کو ریڈ کر رہا ہے, یہ اوپر سے ریڈ کر رہا ہے اور یہ نیچے والے سے ریڈ کر رہا ہے. تو یہ ایک پلیٹ کے اوپر 2 سرفیس, اور اگر یہ ساری کی ساری پلیٹس لے لیں تو ٹریک نمبر فرض کیا ٹریک نمبر 200, تو ٹریک نمبر 200
इधर टॉप पे नीचे, टॉप पे नीचे, टॉप पे नीचे, टॉप पे नीचे, ये सारा मिला के एक सिलेंडर बनता है, ठीक। सो आर्म इसके अंदर मूव कर रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली दो तरह के आर्म्स होते हैं, एक वो आर्म जो मूव करता है और एक फिक्स्ड आर्म होता है। फिक्स्ड आर्म का क्या मतलब है कि आपके जो आर्म है उसके ऊपर मल्टीपल ट्रैक के हिसाब से, हर सरफेस के हिसाब से एक एक आपने हेड लगाया हुआ है, और वो बल्कि हर ट्रैक के हिसाब से हेड लगाया हुआ, सॉरी, जो हर सरफेस के हिसाब से लगाते हैं वो तो मूव करता है, और जो हर ट्रैक के हिसाब से लगाया हुआ है तो मल्टीपल हेड्स लगाए हुए हैं एक के ऊपर, और वो प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज है उस ट्रैक के ऊपर। तो उसमें फिर आपका सीक जो है जरा फास्ट हो जाता है, लेकिन बड़ी लग्जरी हो जाती है और वेरी एक्सपेंसिव हो जाती है हार्ड डिस्क उससे। ओके, सो ये मैं सारी चीजें आप एक्सप्लेन इट टू यू। सीक टाइम किसे कहते हैं और रोटेशनल डिले क्या है और एक्सेस टाइम क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। सीक टाइम कहते हैं द टाइम टू मूव द आर्म टू द प्रॉपर सिलेंडर, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। रोटेशनल डिले द टाइम फॉर द प्रॉपर सेक्टर टू रोटेट अंडर द रीड राइट हेड, और एक्चुअल डेटा transfer is the time at which the data is read or written. So the driver keeps list of requests in the form of block number that is translated into cylinder number and the head number, the surface number and track number and the sector number. Okay, so we try to optimize the सीक टाइम, क्योंकि हम आपको जो मैंने स्टार्ट में एक स्लाइड दिखाई थी उसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन सीक टाइम इंप्रूव नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू इंप्रूव दी सीक टाइम देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, और इसमें अगर हम देखें जो पार्ट 1 के अंदर दिए हुए हैं, RSS, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, PRI है, प्रायोरिटी बाय प्रोसेस और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वो सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट आउटसाइड, जो कि यूजर डिसीजन लेता है कि दिस शुड आल्सो मैटर। और जो पार्ट बी के अंदर है, शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट, बैक एंड फोर्थ ओवर डिस्क, वन वे विद द फास्ट रिटर्न, scan and end times और F scan, these are different algorithms। मैं ऐसा करता हूं कि इसमें से एक या दो एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि you just read it out by yourself। So I can quickly explain one or two। First in first out, it's an outside decision taken by the administrator कि भाई it should be very fair। Fair means के first user should get the service first and the user that comes last should get the service in the last। लेकिन इससे शायद आपकी डिस्क का जो सीक टाइम है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। और अगर आप देखें कि जिस फॉर्म के अंदर यूजर आ रहे हैं, आप सिलेंडर नंबर 0 को ट्रैक नंबर जो है 100 को रीड करते हैं, फिर ट्रैक नंबर 25 पे चले जाते हैं, फिर ट्रैक नंबर 175 पे आ जाते हैं, फिर ट्रैक नंबर 50 पे, तो आप zigzag कर रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, जिसकी वजह से आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी, ये भी आउटसाइड डिसीजन है, जो आप कहते हैं कि किस यूजर की प्रायोरिटी हाई है। तो जिस यूजर की प्रायोरिटी हाई है, इफ यू हैव अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, देन यू कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी यूजर को आप पहले सर्विस देंगे, और हायर प्रायोरिटी यूजर का जो प्रोसेस होगा वो भी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा, उसको आप पहले सर्विस देंगे और लोअर प्रायोरिटी को बाद में देंगे। लेकिन सपोज आउटसाइड अगर डिस्टर्बेंस नहीं है और आप प्योर डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी, सो वी कैन हैव अ शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट। तो हम देखेंगे सिलेक्ट द डिस्क IO रिक्वेस्ट दैट रिक्वायर्स द लीस्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्क आर्म फॉर इट्स करंट पोजीशन। आपको करंट पोजीशन आप मेंटेन करें बफर के अंदर, और उसके बाद एक लिस्ट बनाएं कि जनाब वो जो जैसे जैसे क्यू आती जाती है, क्यू को आप अरेंज करें, और आप ऐसा उस रिक्वेस्ट को पहले चूज करें जिसमें आर्म को कम से कम मूव करना पड़े। फर्ज किया अगर आप 100 पे हैं तो 100 के नियरेस्ट फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से 90 है, 90 के बाद लेट्स से 68 है, 65 है, उसके बाद 48 या 50 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर आप जंप लगा के और फिर ये इनको यहाँ पर सर्विस देना शुरू कर दें, ठीक। और इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसमें अगर हम देखें तो जिगजैग हो रही है सारी की सारी,
اور while head is on cylinder number 11 request for 1, 36, 16, 34, 9, 12 یہ ریکویسٹ آتی جا رہی ہیں اور آپ ان کو اس میں سے دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر آپ کا سلنڈر پہلے 1 پہ تھا تو پھر 1 کے بعد آپ 36 پہ جانے کی بجائے آپ سروس دیں گے if the head is on cylinder number 11 اور 11 میں اس کو نیئرسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ you can take the decision first in first out کے بیسس پہ تو آپ کو یہ موو کرنا پڑے گا نا. آپ 11 کے بعد جائیں گے 1 پہ تو آپ کو 10 سٹیپ موو کرنے پڑیں گے, 1 سے 36 پہ جائیں گے تو 35 سٹیپ موو کرنے پڑیں گے, 35 سے 16 پہ جائیں گے تو 20 سٹیپ موو کرنے پڑیں گے اور آپ کو 116 سٹیپس آرم کو موو کرنے پڑیں گے. لیکن شارٹسٹ اسکین فرسٹ میں آپ 11 پہ اگر موجود ہیں تو 11 سے پھر آپ نے 12 پہ جانا ہے تو سنگل 1 سٹیپ, پھر اس کے بعد آپ نے 1 سے جانا ہے جناب آپ نے 16 پہ 12 سے 16 پہ جانا ہے تو آپ کو تقریباً 3 سٹیپ, 15 پہ جانے کے لیے 16 ہے شاید تو ادھر 4 ہونا چاہیے, then 7 then 15 then 32 تو آپ کے جو نمبر آف آرم موومنٹس ہے وہ 61 ہو گئی. ٹھیک, اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو یوزرز ہیں نا جو بیچارے ایکسٹریم اینڈز کے اوپر ہیں وہ ویٹ ہی کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے ایک اور الگوریدم یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیویٹر الگوریدم. جیسے کہ ایک بڑے ہوٹل میں اگر آپ کا 100 فلور کا ایک ہوٹل ہے اور وہاں پر اگر آپ سروس دے رہے ہیں تو ایلیویٹر جو الگوریدم یوز کرتا ہے وہ ایک گریڈی الگوریدم ہوتا ہے. اٹ از کالڈ اے گریڈی الگوریدم. دی ہیڈ could get stuck in part of the disk if the usage is heavy. اس میں کیا کرتا ہے ایلیویٹر keeps moving in one direction, وہ ایک ڈائریکشن میں موو کرتا جاتا ہے اور سروس دیتا ہوا چلا جاتا ہے, پھر بالکل ایکسٹریم اینڈ کے اوپر پہنچے گا اور پھر دوسرے اینڈ کے اوپر سروس دینی شروع کر دے گا. تو اسی وجہ سے اسی الگوریدم کو ہم ہیڈ کے لیے بھی کریں گے کہ اگر یہ ایک ڈائریکشن میں موو کرتا چلا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں موو کرے تو اس کو ہم ایلیویٹر الگوریدم کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے پہلے ڈاؤن جا رہا ہے یا آپ اگر فلور نمبر 100 پہ ہیں تو آپ ٹاپ پہ جائیں گے فلور نمبر 199 پہ اور پھر آپ واپس فلور نمبر 0 کے اوپر جائیں گے. اور دس از آلسو نون ایز این ایلیویٹر الگوریدم. Arm moves in one direction only, satisfy all outstanding requests until it reaches the last track. Then پھر اس کے بعد ڈائریکشن چینج کرتا ہے اور پھر دوسرے اینڈ کے یوزرز کو سروس دینا شروع کرتا ہے. So it favors the job whose requests are for tracks nearest to the both inner, یا تو دیکھیں کہ inner most کو فائدہ ہے یا outer most کو فائدہ, مطلب ایک وقت میں یا تو وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے پھر وہ اس کے بعد سائز چینج کرے گا دوسری ڈائریکشن میں جائے گا تو it might not be very fair to all. تو اس کے بعد یہ ہے circular scan. Restrict scanning to one direction only. When the last track has been visited in one direction, then the arm is returned to the opposite end of the disk and then the scan. اچھا پیچھے والے میں واپس آتے ہیں. اس کی ڈرائنگ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے. یہ نارمل بتا رہا ہے کہ آپ بڑے ہوٹل کے اندر اگر موجود ہیں اور وہی زگ زیگ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ جو درمیان میں نا آپ فلور نمبر 75 پہ ہیں وہی جو نیکسٹ آتا ہے اوپر ایک ڈائریکشن کے اندر وہ اس کو سروس دینا شروع کر دیتا ہے یا وہ اپوزٹ میں دینا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ڈائریکشن چینج کر رہا ہے. لیکن اس کو ہم نے جب کہا یہاں پہ سی اسکین کے اندر اب وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آپ ڈائریکشن کو فکس کرویں, فرسٹ موو ان جسٹ ون ڈائریکشن دین موو change the direction and provide the service. اچھا اب اس کے بھی اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. when the last track reaches تو یہاں سے یہاں تک پہنچا تو جو بیچارہ یہ والا ہے نا یہ تو سوکھ جائے گا انتظار میں, یہ والا جو ہے ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر ڈسک وہ تھی لفٹ موجود تھی یا آپ کا ہیڈ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آل دا وے دوسرے سرے پہ گیا پھر واپس آیا اور پھر اس بیچارے کو سروس میں بھی. سو یوز 60 سلنڈر اسی ایگزامپل کو اگر آپ اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں لیکن سم ٹائم اٹ ٹیکس مور, لیکن یہ پرفارمنس کو امپروو کر دیتا ہے بٹ یہ از مائٹ ناٹ بی ایز slightly worse than the shortest scanning first but better and fair in terms of service کے ایک ڈائریکشن کے لوگوں کو ایک اینڈ پہ سروس دے رہا ہوتا ہے. In order to improve this algorithm what we can do, we can make multiple segments.
ٹھیک ہے نا. وہ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے الگوریدمس کے, کچھ ایون فلورز کے اوپر لفٹ چل رہی ہوتی ہیں, کچھ آؤٹر فلور کے اوپر لفٹ چل رہی ہوتی ہیں. پھر آپ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کسی ٹائم پر وہ ٹاپ سیگمنٹس کے اوپر اس کو سروس دے رہی ہوتی ہے کہ یہ لفٹ جو ہے وہ اس فلور تک جائے گی, یا یہ لفٹ جو ہے وہ فلور نمبر 50 سے نیچے نہیں رکے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یو مینٹین دا سیگمنٹس دی ڈسک ریکویسٹ کیو انٹو سب کیوز. آپ سب کیو بنا دیتے ہیں تاکہ سٹارویشن نہ ہو, کوئی ایسا یوزر جو ہے وہ بہت دیر تک اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. دین دیز سب کیوز آر پروسیسڈ ون ایٹ اے ٹائم یوزنگ اسکیننگ الگوریدم. اسی ڈائریکشن کے اندر آپ اس کو ایک کیو کو, اب آپ کیو از مینٹینڈ جیسے جیسے ریکویسٹ آ رہی ہے, جیسے جیسے آپ نوب پریس کر رہے ہیں اس کی ایلیویٹر کی. So while the queue is being processed, new request must be added into the second queue. جو بعد میں آیا وہ سیکنڈ کیو کے اندر آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کرتے رہیں. سو اف فیور دین این ریکویسٹ, تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر کم یوزرز ہیں تو پھر آپ ان کو ون گو میں سروس دے سکتے ہیں. لیکن اگر نمبر آف یوزرز زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ ملٹیپل کیوز بنائیں. اور اسی کی پھر ایک نئی فارم ہے جس کو ایف اسکین کہتے ہیں, اس کو کائنڈلی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں یہاں پر. ڈسک کنٹرولر کیش یہ کیا کرتا ہے, ڈسک کنٹرولر ہیو دیئر اون کیش. یہ جب آپ کسی ٹریک کو ریڈ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ جناب کیونکہ سیک کر کے وہ خاص پوزیشن پہ تو پہنچ جاتا ہے, تو انسٹیڈ آف ریڈنگ ون سیکٹر یہ ملٹیپل سیکٹرز ریڈ کر لیتا ہے, یا پورے کا پورا ٹریک ہی ریڈ کر لیتا اس کا, اور اس ٹریک کو اپنے بفر کے اندر سیو کر لیتا ہے. وین any request comes and if the sector is or the track is already available in the cache, then the service is provided from the cache, otherwise پھر وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. تو یہاں پر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ when IO request is made for a particular sector, a check is made to determine if the sector is in the disk cache, تو وہاں سے دے دیں گے سروس, otherwise it will discard, or if no then the request of the sector is read from the disk. تو اس طرح ڈسک کیش کرنے سے بھی کنٹرولر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکتا ہے. So it reduces the average memory access time by exploiting the principles of locality. وہی چیز اگر آپ ازیوم کریں جو میں نے آپ کو بتائی تھی ایگزامپل کہ آپ کی سیکوینشل ریڈ کر رہے ہیں فائل کو, تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر اس ٹریک کو ٹریک کے سیکٹر 148 کو ریڈ کیا ہے تو نیکسٹ ریکویسٹ جو ہے وہ 149 کی, نیکسٹ 150 کی آئے گی. ایسی صورت میں آپ پرو ایکٹیو موڈ میں پورے ٹریک کو ریڈ کر کے آپ اس میں رکھ لیں, اور جب وہ ریکویسٹ آتی جائے تو پھر آپ کو دوبارہ سیک ٹائم سارا بچ جائے گا, ڈیٹا ریڈ ٹائم بچ جائے گا, اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آلریڈی کیش ہوا ہے کنٹرولر کے بفر میں, ناٹ ان دا میموری, کنٹرولر کے بفر میں. سو ڈسک کیش از اے بفر ان دا مین میموری فار ڈسک سیکٹر. ہاں لیٹر آن کنٹرولر کے بفر سے جب آپ ڈیٹا لے کر جا رہے ہیں اور اگر آپ ڈی ایم اے کر رہے ہیں تو یس یو کین ہیو کیشنگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو میموری میں بھی کیش کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو مین سی پی یو کے اندر بھی کیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے بفر کے اندر کیش کریں تو وہ ڈسک کیش کہلاتا ہے, اور اگر آپ چاہیں تو پھر اس کو ڈسک کیش کے اس بفر کو اگر آپ کے پاس بس اویلیبل ہے اور ڈی ایم اے ہے تو آپ میموری میں بھی کیش کر سکتے ہیں. لیکن الگو شوڈ بی ویری انٹیلیجنٹ. Bad sector, the controller approach, the manufacturer defects that which are the bad sector. جب بھی آپ ڈسک بناتے ہیں تو اس میں جو کوٹنگ کی وجہ سے یا کوئی ایک بٹ بھی اگر اس کی خراب ہو جائے تو وہ سیکٹر جو ہے وہ بیڈ ہو جاتا ہے. تو مینوفیکچرر کیا کرتے ہیں, کچھ اسپیئر سیکٹرز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ اسپیئر سیکٹرز کی لسٹ جو ہوتی ہے مینوفیکچر جو ہے کوڈ کر دیتا ہے کنٹرولر کو, جو ڈسک کنٹرولر ہوتا ہے, اور جب کوئی سیکٹر خراب ہوتا ہے تو ڈسک کنٹرولر اپنے طور پر آلٹرنیٹ جو اس کے پاس اسپیئر سیکٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے اٹ از ہڈن ان دی کنٹرولر اٹ سیلف. آپریٹنگ سسٹم کو اس کو نہیں پتا ہوتا. جسٹ لائک کہ وہ جو 2 زون ہیں یا 3 زون ہیں اس کو کیش جو ہے کنٹرولر جو ہے خود ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, سملرلی دا بیڈ ٹریکس جو ہے آر ہینڈلڈ بائی دی کنٹرولر اٹ سیلف. تو اس کے لیے بیڈ سیکٹر ہینڈلنگ جو ہے از ڈن بائی دی کنٹرولر, اور اگر if it is done by the operating system then it is very time consuming and complicated task.
So just quickly, اگر آپ assume کریں these are the two sectors which are spare. Normally they are more than two. کافی زیادہ سیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اسپیئر ہوتے ہیں, جو کہ کنٹرولر جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے in replacing the bad sector. Okay, so اس ایگزامپل میں دیکھیں, suppose sector number 7 has gone bad. The controller has assigned it as a 7. So there are two options. One, کہ جو آپ اس کو میپ کر دیں alternate کے اوپر. Second, آپ اس کو کنزیکٹیولی اس کو مارک کر دیں بیڈ, اور اس کو سیکوینس کے اندر ان تمام سیکٹرز کو مارک کرتے چلے جائیں. Now there is a very logical question quiz کہ ایک کوئز میں نے پہلے ہی پوچھا تھا, I have forgotten کہ میں نے کیا پوچھا تھا. بہرحال this is another quiz کہ بھئی یہ تو زیادہ اوور ہیڈ نہیں ہے کہ you are just writing it, سارے کے سارے ڈیٹا کو موو کر رہے ہیں آپ, تو یہ تو بڑا ہی inefficient ہوگا. تو what could be the most optimal time to have the scenario like this? So that is the quiz. Okay, so answer quiz کا ساتھ کی بتا دیتا ہوں آپ کو. The answer is that at the time you are doing the low level formatting, while doing the low level formatting, the controller encounters a bad sector. یہ کیا کرتا ہے کہ وہ consecutive sector کو نیا نمبر اسائن کر دیتا ہے, اور پھر وہ سیکوینس کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ہر ٹریک کے اندر جو اسپیئر سیکٹرز ہوتے ہیں وہ اسکپ ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ اس کو یہاں پہ اسکپ کیا جائے, اس کو آپ یہاں پر ایکچولی اس کو اسکپ کر دیں, اینڈ دین یو کین ہیو اے کنٹینیوس سیکٹرز لائک دیٹ. اوکے, bad sector, if it is managed by the operating system, then it is very, very poor. Stable storage. I think I should stop here, and I'll come back to this topic in the next lecture, اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں. So once again, if you find me a bit fast today, I will request you that slow down the speed of your player. آپ اس کو 10, 15, 25% تک اس کو slow down کریں. It will not make much effect, but you will be able to understand the explanation if it is too quick for you. Okay? بہرحال بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں ہے, اس لیے I have been a bit fast today. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. Till then, خدا حافظ, اللہ نگہبان.